You have to search this particular symbol, CATIA, globe type symbol will be there. Okay, just right click over this and select open. Single time you have to perform it so that it can be easily open. So search for this particular symbol, CATIA. So I will upload this video also over YouTube. You can find it out. Okay. So just you have to search on YouTube Azhar Bargir. You will get the okay. You will get the videos. Even older also there, but we are going to use a new model to create in this. Okay, take a picture of this model. So we have to create this model and keep your phone just opening this image in front of you so that you can easily read your dimensions. Okay. So this, I think you have a engineering graphics one subject. So in that particular subject, this is the last topic, isometric view. Isometric view means ISO means one, okay, and in that particular view, you can observe all the dimensions, namely length, width, and height of an object in a true scale. Means it will be say if I'm looking to the particular object, it should be whether it is 96, it should be 96. It will be 64, 64 width and height will be 64. It should be 64. There will be no any reduction or enlargement of lengths. It should be a true scale. So you have to keep your object in 120-degree angle. Why? Because if you divide three dimensions, 360 divided by 3, you will get 120. So that if you keep your object in 120-degree angle, you can observe the length, height and width of the object with a true scale. Okay. So in this case, the observer is looking from this. This is the front view of that object, and this is the right hand side view. Because why? Because it's the right side of the object. So this is the right hand side view, and that if we look from this top, this will be the top view. Okay. So that will be taught to you in engineering graphics, in which orthographic projection, that is for the two dimensional purpose, and this will be the three dimensional purpose. So two topics will be there over this. Okay. So what we will do for our completion or how to read this object dimensions or profiles, we have to observe the object in such a way that we will bit in number of parts one by one in a particular sketch, and then we will complete that two-dimensional sketch into three-dimensional sketch. Suppose, for example, if I want to complete this L shape, you can observe and try to imagine the object while drawing from two-dimensional to three-dimensional. So right now you are observing a three-dimensional object. Okay. Ah, so if I want to
create this L shape, but it has some features over here. It has a round shape and all. So how to convert that into software, we will learn that also. But we will sketch one L shape first in two-dimensional. Then we will give the volume to that sketch so that it can get this particular 64 width. Okay. Then after for creating this pocket, we will draw one hole, okay, or circle with the particular dimension given in this diagram. And similarly, we will complete one by one by sketching different two-dimensional to three-dimensional. Okay, you will understood after the completion of the object. जैसे आपका बढ़ते जाएगा वो आपको समझ में आते जाएगा. सिर्फ रीड जब मैं बता रहा हूँ when I'm telling you how to observe that, just carefully look into it and just keep the phone on by opening the वो फोटो सिर्फ इसके खींचने के लिए नहीं लिया है, वो ऑब्जर्व करने के लिए भी लिया है. Okay, so that you can get your imaginary power for creating, and that will be helpful in your other subjects also. Okay. So this is the interface of this software. So this software can be used for CAD modeling, for surface modeling. Then what different things we can use this software for infrastructure, for electrical designing and all, for the simulation purpose also. So if you go to the starts, various workbenches are there for infra, for mechanical, for shape designing. So vast software is there, this one. So we are going to learn 0.01% of this. Okay. So for this particular session. So you have to go to this mechanical design and select this part design because we are creating a part, okay, or model. Okay, so in that only you have to go. Just click over that. Your interface will change and you will able to see this particular. This is called as the planes. These are the planes. How we are observe which one is XY, which one is YZ and ZX plane. You can observe this coordinate system. This is the x-axis, this one. This will be the y-axis, and this will be the z-axis. Okay. So similarly, these planes are created over here. So this will be xy, this will be yz, and this will be the zx. Okay. So involvement dip, if you have to observe this Cartesian coordinate system, you can able to understood which one is x, y, y, z, and zx. Why we require this? Because while sketching, you have to observe your sketch and select the proper plane so that you can create the same perspective of your object. Same perspective of your object. Okay, so that's why we require the planes. So how here also, if you open this, you can get x, y, y, z, zx. Some software doesn't have this tree. Okay, some error is there, but you can observe over here. So this is called as a part tree. Part tree will record all the commands you are going to use in this, so that you can jump to any command and you can edit the command. Okay, so if some students suppose of previous batches close this tab or this tab in this way, so how to find out that tab? Just you have to reset this taskbar. How to reset it? So just right click over this DDS CATIA. This is a Dassault system software, so that's why DDS CATIA. So go down to customize option. One window will pop up. Go to customize option. This window will pop up, customize window. In that you have to click over this toolbar tab. So in that another two tabs are there, restore all the contents and restore the positions. So what it will do, it will bring back all the content which are closed or moved. If it is moved to somewhere else, it will restore the position also. So you have to restore all the contents and restore all the positions. Select OK, so that all the tabs and the taskbar will come to its default position condition. Okay. Right click. You are done. Right click over this DDS CATIA. Go down to this customize option. In that, go to toolbars.
Customize option, toolbars. In that, restore all the contents and restore all the position. Look over the screen. Look over the screen. Restore all the contents and restore all the. अरे इथं दिसतंय ना रे इथं. हे काय कर्सर माझं कुठं आहे बघ. Just follow the cursor. Restore all the contents. Select OK and restore position. OK and close it. So this will bring back all the default condition of your workbench. Okay. So now we'll start drawing this object. So what we'll do, we will use YZ plane for selection. So while designing any model, we have to design in such a way that minimum sketches are required. Minimum sketches are required. Minimum commands are required to complete that object, so that it will require you less time, okay, efforts, as well as it is the good sign of a design. Okay, so what we'll do, we will start to draw this L shape first, okay, in this way, okay, and use 96, and then this will be 16 mm, and this will be 16 mm, and height is 64. Okay, 96, 16, 16, 64. So how to draw it, we'll see. First of all, you have to select this YZ plane. Click over this plane. See the cursor first. Click over this plane. Check over the screen. स्क्रीनवर बघा. इथं बघा ना. हे बघा. Cursor इथं आला. Select. When you select any option, it will change into brick red color. So it means that your that option is active. Okay. Now you have to go to this particular command. Will just it's just like a paper pencil type of symbol. Just see the cursor. Okay, so it's over here. Click over that sketch. Your interface will change. So it will change to two-dimensional. So first it is in a three-dimensional state. Now the workbench is changes to paper pencil type of symbol. I will reset you. Yeah, just it's not resetted. Go to the sketch option. You are not inside this. Okay. Now, so I will again reset my stuff. You don't require to reset it. I just want to reset the position. Okay. So here you can see as my I'm using a laptop, so the commands will be hidden over here because of the resolution, nothing else. Okay. So here is a profile command. Okay, don't move that. Just look it. For your understanding, I'm moving it. Okay, so this is a profile taskbar in which you can see a profile command, rectangle, different types of rectangles are there, keyhole, hexagon shape. So these are different profiles, circles, arc, and all. Then splines, ellipse also, parabola, hyperbola, and all. Lines, center line, points. So these are all the profiles which you can use for creating your sketch. Okay. Then this taskbar is a operation taskbar, so in which you can cut your line, you can mirror your image or the sketch which you drawn by symmetry. You can create a radius or fillet out of it, or chamfering of this means chamfer means this is the chamfer. You can give the chamfer to your object. So different operation type of commands are there. So that is
That's why it is called as a operation taskbar. Then to give the dimension to your sketch or any constraint to your sketch, so this is a constraint task bar. So in which you can give the dimension, you can give the constraint of suppose it is a parallel, perpendicular, if the centers are same, concentricity. So this type of parameters you can give to your sketch. Okay. Then another taskbar you are going to use will be this view. Okay, so if you want to zoom in, zoom out, means it's related to the screen view. Okay, if the object is not visible in single glance, then you can fit your screen in that way. You can use this one. Okay, so we will use using this taskbar, constant taskbar, then this operation taskbar, profile taskbar, and one important taskbar, the or command we can say to exit from this. Okay, so all this commands you are going to use in this Sketcher workbench. Okay, so again I will reset the position so that you can able to find it easily. So we'll start sketching it. Okay. So for sketching, just look first and then you can perform. Okay. So you have to click over the profile command. So as soon as you left click over this command, you will see that it converts it or change its color to from blue to brick red color. Okay. Now you have to move your cursor to the origin and make sure that you have to keep your object at the center or the origin of this object, so that you can create it much faster as compared to if you are offsetting your uh, object. So make sure that it should be at the center or the origin. So when you move your cursor to the origin, you will able to see two circles, one lighter circle and another one is a darker circle. So it means that your cursor is exactly at 0, 0 position. Okay. Then without moving your mouse, just left click. So it will start creating the line. Okay. So profile line and this line, what is difference between that? In profile line, you can create the line continuously, so it will not break. Okay, if you just make a line, so it will create continuous lines up to the whole completion, or when you escape from that command, at that time it will create the lines. So when you see this line in white color, it means that it is a non-linear, and when you see this in blue color, it means that it is a straight line or it's a linear line. Okay. Then just move. How will I will draw? I will draw this first, this line. I will stop over here, left click. Again I will move the cursor towards upward direction. Again a left click. Again towards here, left click, left click, left click, and again to the origin. So in this way I will complete one L shape. Randomly you have to select first, draw it, and then after you have to give the dimensions, so that each and every sketch will be as per these dimensions. Okay. So just see how I am drawing it. So first I will click first at the origin, left click, then I will move towards right. Okay. Then again, without moving your mouse, left click, then change the direction to upward direction. Again it should be converted into blue color. Leave your mouse, left click, again goes towards here, left click, upward direction, again come back to it. So it will show you the reference also where it is going to start. The blue dotted lines means that this point means this line starting point, and this on over here is the same or the parallel. Then again come back to its origin, and when you again see that two circles, again left click. So it will entirely close loop your profile. So there should be no open faces or open ends of your profile. So make sure that, and don't drag your mouse while clicking left. When you're clicking left button in your mouse, don't hold that mouse with it or drag that mouse, so that what will happen? So see the difference. If I creating one line and I hold that one, it will create this type of. It will create the radius. Huh?
It will create a radius line. So don't move that. Just give the direction, and when you want to stop there, leave your mouse and again left click and then change the direction. In that way, you can complete it. Try it. Just try it. बचपन में अगर कीबोर्ड और माउस से गेम्स खेले होंगे तो जल्दी आएगा. मोबाइल से खेले होंगे तो नहीं आएगा. देखो बेनिफिट अब गेम खेलने का क्या है. इसने काउंटर स्ट्राइक खेला होगा तो उसको तो बहुत अच्छा है. ओके गुड. हो गया कंप्लीट. अब देखो, you can see one L shape of mine will be different, her will be different, his will be different. Okay, but we have to create give the dimension which is given in your problem. So how to give the dimension? Just complete first. Okay, complete. If it is creating wrong, then you can use Control Z so that it will reset again. Control Z, so it will get back to its last position so that you can easily draw it. वो इतना टाइम नहीं लगता है. Within 5 seconds, you have to complete this. 5 to 6 seconds. Just copy the profile. Okay, wrong बना है. Good. एक मिनट कंट्रोल जेड करो. कंट्रोल जेड. कंट्रोल जेड और एक बार. कंट्रोल जेड. दबा के रखना कंट्रोल जेड. ये देखो इधर ले गए. माउस छोड़ दिया. लेफ्ट क्लिक. ऊपर लिया. लेफ्ट क्लिक. इधर लिया. लेफ्ट क्लिक. ऊपर लिया. यहाँ लिया तो देखो. हो गया. अरे ये तो हुआ नहीं. एक दाखवतो नंतर को. ये देखो इधर लिया. बनो. बना करो. जल्दी करो. Now you have to give the dimension to this profile. First of all, you have to check what is the length, height, and this. So it is 96. This is 16. This is also 16, and total height is 64. You can see over here. So how to give the dimension? So you have to go back to this command. Go to this command. Sorry. Go to constraint. Double click over this. Double click, not a single click. Double click over this blue box. This one. Double click. And just see first and then do it. So double click, what will it do? It will engage that command up, when you again go back or escape from this command. It will continuously gets on. Okay, until you escape from that command or go back and just click over this. It will exit from this command. Okay, so double click will ensure that it will be on. Okay, and that will save your time. Or otherwise, you have to go back again select it, again give the dimension, again go back. So that will save your time if you double click that particular command. Okay. Now to giving the dimension, double click over this, come back to this line to give the dimension, click over it, left click and go move your mouse downward, again left click to stop the dimension. Then again click over this, see first and then do it. Okay, click over left click, then again move your mouse, again left click. Click over this line, again move your mouse, left click. Click over this line,
Move your mouse left click. Don't give dimension to this. What will happen? It will over constrain your sketch. Okay, so don't give extra dimensions. It should not be under constraint, or it should not be a over constraint. It should be properly constrained so that your sketch should not move. Now I try to move this, it will not move. You can see. If I try to move this, it will not move. If I cancel this dimension and try to move it, it will move. So it is called as under constraint. And when I give more dimensions or to your sketch, it will be over constraint. So it should not be over constraint. It should not be a under constraint. It should be properly constrained. Okay. So all dimensions will be different now. Okay. Mine will be 75. Your should be, it will be 100 and plus dimensions of it. Okay. So now we have to change this dimension. How to change it or alter the dimension? Just go to that particular number and double click over that number. Double click over that number. One small window will appear. Just change that to 96, or you can do one thing. Start with the smaller dimension. Means which is smaller? This one is smaller, 16. But double click over this, give 16. Double click over this, give 16. Double click over this, 64, and then you can go to 96 in that way. So now our sketch will be same. All students and mine sketch are the same as per the problem. डबल डायमेंशन दे, एक डायमेंशन डिलीट करना पड़ेगा, ये पर्पल वाला. हाँ, डिलीट डिलीट बटन. हाँ, डिलीट. नाउ यू कैन अल्टर. Click over the dimension. Click over the dimension number. Number. Double click. Double click. No right click. Double click. Left click. Left double click. लेफ्ट दो बार क्लिक करो फास्ट में. छोड़ना नहीं, गैप नहीं करना. ये देखो ये ऐसा. हाँ, राइट. 16 हो गया. दीजिए. हो गया क्या सबका डायमेंशन देखिए. नाउ वी हैव क्रिएटेड वन टू डायमेंशनल स्केच. क्या है? हाँ, फिगर गलत है इसकी वजह से आ रहा हुआ है. स्किप करो. Okay. Now try to give it. यहाँ पे भी गड़बड़ कर दिया. Now alter this 60. ओके. ये वाला मत दो. यहाँ पे भी जॉइंट्स, जॉइंट कैसा आ रहा है? हाँ, यहाँ से दिए थे. अब चेंज करो. डबल क्लिक करो इस पर. नहीं, छोटे से चालू करो. 16, 16, 16, 64 एंड 96.
चल. So as you complete the sketch, you have to move back to the 3D environment. Okay. So for that, you have to exit this sketcher workbench. So one upward arrow type symbol is there. Just click over that exit workbench. Exit workbench. Click over it. Again, you will come back to that particular plane type result. Okay. Now to give the volume to your this sketch, which command you are going to use? This one, pad command. Just below that sketch command, you have a pad command. Pad command. Exit this. Pad command. Open sketches are there. That's it. Open sketches. Okay. Yes, no one. No one. No. Uh, open. यहाँ पे open. ये dimension भी गलत है ना पूरे. 64 है वो. I think that one another line is here. Okay. Now when we click over this pad option, by default it will show you some value of 20 mm. So what we required, that we have to see how much we required, 64. But I want to keep my object at the origin. So what will I will do? I will, instead of giving 64, I will give 32, and by using that profile which you have created just right now, 22 from one side, 32 from one side, so that it will become a 64 total in total. Okay, so give here 32, and if you preview this, it will create in one direction 32. If you click over this mirror extend, then only it will create total 64. So 32 at one side and 32 at on other side. Either side it will be 32. So it will be total 64. So give 32 over here. Check this box, mirror extend, and then select OK. And select OK. Okay. Oh, okay. So your perspective is different. Hmm. Uh, if you're not able to see the edges, go to this particular view option in that cylinder. In that cylinder, uh, se- select this second shading with edges. Just click over that. You will able to see. Okay. Okay. Everyone has created. Now, what is difference in our problem and this one is that it has a radius over it. Okay, at the corner of the top. Okay, how much radius it is? R18. You can see R18. Okay, so how to create without sketching you can achieve that. Okay, so for that you have to use a one feature command. So this one is a edge fillet. Search for this edge fillet. Edge fillet. You find it? जस्ट क्लिक ओवर दिस प्रोफाइल. प्रोफाइल पे क्लिक करो. प्रोफाइल स्केच पे तुम्हारे स्केच. अरे जे बनवले ते एल शेप जे बनवलाय ना त्याच्यावर क्लिक कर. क्लिक कर. क्लिक. क्लिक. ओपन ओपन पेसेस आर. ओपन आहे. ठीक आहे. एक्स्ट्रा काय चालेल.
Okay, click over this hfillet command. Click over this. Uh, how much radius is given? 18. 18 is the radius. Change that 5 to 18. 18. Change it 5 to 18 first. Okay. Now we have to select that particular age so that your gate you can achieve this radius profile. Okay. Hmm. एक minute. Now for selection purpose, you have to select this age. Select that by left click, single left click. Okay. Then select OK. No, 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 no. Sirf you have to select this one. Go to this age fillet, change this 5 mm to 18 mm first, and select this age only. This age, horizontal age, not the entire this L, only this horizontal age, and then select OK. Okay. Now you will get the same curvature type or radius type of feature. Okay. Now moving ahead, so we have created this L shape base. Okay. Now what we'll do? We'll do this simple circles. Okay. But you can observe this. This is not a single circle. It is a counter sync type of circle is there. Okay. So before that, I will show you this undercut first slot. This undercut slot. So we will perform this and then after we will go for this. Okay. So for creating this undercut, so it is a through undercut, just similar to this. ये जैसा इसका अंडरकट है ना, वैसा ही वो ऑब्जेक्ट के नीचे से ऐसा पूरा अंडरकट. Okay, that undercut slot. So how much size is it? It is 40 mm, 40 mm. Okay, length, and the height is how much? 16 minus 11. So it will be 5 mm height and 40 mm width. Okay. So for that, without selecting this plane, you have to select this surface. Now you can refer your surface. Wherever the profile you have to create, select that surface. Okay. So select that surface first. Okay. If you're not able to select this or sometime this will be in this way or another way, then you can use this command, view command of rotate. You can rotate your model. Okay. And I will show you the shortcuts also of your mouse. Press scroll button and right click button, you can able to rotate it. Simultaneously both buttons you have to hold it and you can rotate your object. Okay. Scroll button and right click button दोनों प्रेस करके रखो, you will able to rotate your object. Okay, if only scroll button, you can able to move your object. Zoom in, zoom out. स्क्रॉल बटन प्रेस करो, राइट क्लिक बटन प्रेस करके छोड़ दो, स्क्रॉल बटन होल्ड ही करना है. Then you can able to zoom in, zoom out by mouse. Okay, and it is not comfortable to you, then you can use this command also. Okay, anything, but mouse will be the much faster way. So select this surface and go to sketch again. Select the surface and go to sketch. Now again it will go back to the sketcher bar. If it is moved towards left side or right side, then you can fit your sketch, so it will come back to its center position. Fit or okay. Dimensions are wrong. Dimensions are wrong. Its height is too much. Height is not given. Should be 64. Then nothing matter but. Hmm. Okay. Feature command might be over here.
18 ओके, 18 डाल के ओके कर दो, हो गया। नाउ select the surface, this surface, and go to sketch. Half के लगेंगे मेरे रिएक्शन में फिट फिट करके ले लो, तो बीच में आ जाएगा बराबर सेंटर में। Use this button so that your sketch will be at the center. Okay. Now you have to create this rectangle. Okay. So I will use the rectangle to cut the portion, the slot undercut. Okay. So how much size I will take? I will say I will take a length of 40 mm, and instead of taking 5 mm, I will take a 10 mm. Okay. By creating a rectangle. How to do it? Move your cursor towards this rectangle, you will able to see one white arrow. Okay. When you see the white arrow, then left click. So all the options will be open for you. Just select this second last option, centered rectangle. Okay. Select that one. So you can able to use the center of this. Okay. Now move your cursor to the origin. You will able to see again the two circles, and again left click, and randomly you have to create one rectangle, and left click to stop that creating rectangle. Left click and again another left click to stop it. Okay, click it. Left click. Hmm. Use this second last option. बन गया? Now you have to give the dimension to this rectangle. Okay, so how to give it? Again, go back to this constraint blue box option. Double click over this. Uh, Move your cursor to this section. Left click. Again, move your mouse down towards downward, and again left click. Click over this. Okay, deactivate this command, and then double click over your dimensions. Give 10 mm, and this will be 40 mm. 10 and 40. Again, I will show it. Use this rectangle. Go back to the center. You will able to see two circles. Left click. Move your cursor or mouse, and again a left click, so it will stop creating the rectangle. Go to this blue box option to give the dimension. Double click over this. Click over this line. Move your mouse. Left click. Click over this vertical line. Move your mouse. Left click. Deactivate this. Double click over this. 40, and this should be 10. 40 and 10. It should be not offset. Offset हो रहा है. Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. जब तक जाता नहीं तब तक. हाँ, अब लो फिर से. रेक्टेंगल लो, रेक्टेंगल लो. हाँ, सेलेक्ट. मूव योर कर्सर टुवर्ड्स ओरिजिन. ओरिजिन के पास जाओ. सेंटर में ओरिजिन. देखो ये ओरिजिन है, जहाँ पे दो एक्सिस मिल रहे हैं. हाँ, क्लिक. मूव योर माउस. डबल नहीं करना. हाँ, माउस मूव करो, मूव करो, मूव करो ना, और थोड़ा. हाँ, क्लिक करो. लेफ्ट क्लिक. हाँ, लेफ्ट क्लिक. राइट नहीं करेंगे. लेफ्ट, लेफ्ट क्लिक. हाँ, गो टू दिस डायमेंशन ऑप्शन. डबल क्लिक. नाही नाही ते नाही, त्याच्यावरचा मधला कन्स्ट्रेंट. डबल क्लिक. हाँ, क्लिक ओवर दिस लाइन. मूव योर माउस. वरती घेऊन जा. हाँ, वरती घेऊन जा ना, दिसू दे ना तो लोक. हाँ, क्लिक कर. लेफ्ट क्लिक. राइट नाही रे, लेफ्ट राइट मध्ये कन्फ्युजन झाले. अभी वर्टिकल वाले को करो. वर्टिकल वाला लाइन. क्लिक करो लेफ्ट. हाँ, ये वर्टिकल वाला, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल ये. अरे हाँ, गया तुम्हारा, वो डीएक्टिवेट हो गया है. कमांड, कमांड पे जाओ फिर से. कमांड पे क्लिक करो. ब्लू बॉक्स. हाँ, यहाँ पे है ना ब्लू बॉक्स. ये क्या है? ये डायमेंशन वाला. यहाँ कर्सर देखो ना मेरा कहाँ घूम रहा. ये वाले ब्लू बॉक्स पे क्लिक करो ना.
अभी वर्टिकल, हाँ अभी लेके जाओ, साइड में रखो और क्लिक करो। आप डबल क्लिक करो डायमेंशंस पर और चेंज करो 10 और 40। डायमेंशन पर, लाइन पे नहीं, डायमेंशन पर, डायमेंशन जहाँ पे नंबर लिखा है, नंबर जहाँ पे लिखा है वो। अरे नंबर है, ये नंबर ले लेना, एच और डबल क्लिक कर। हाँ डबल क्लिक, लेफ्ट क्लिक। आता केलं ना आपण, प्रोफाईल बनवली ना, सेम करायचं का, डोकं नाही लावायचं, तसंच करायचं आहे ना. हे बघ, हे आता नंबर आहे ना, या नंबरवर डबल लेफ्ट क्लिक मारायचं, मग असं ओपन होतं. 40, हाँ 10। हो गया. Exit the workbench. Exit. Go to this exit command. जैसे एग्जिट कर जाओगे, यहाँ पे आ गए. Okay. Now you have to use another command. Just below that command, pocket. So this is to add your mod, add the material. This is to remove the material. So pocket, and instead of dimension, use this drop down option, and up to last. Use up to last, so that it will go up to the last, or you can either give 96 mm the length. Okay, so select OK, it will create that undercut slot. You can see one undercut slot is created. Okay, now again move your object, select this surface to create that particular two holes, this one. So simultaneously we can't create two holes because it has different depths. One is a true hole and one another one having a depth of 5. How to read it? Here it is given 8 diameter. So 5 means diameter. Okay. 8 diameter through hole means the smaller hole of this one. This is a smaller hole. This is of 8 diameter, and the larger one having diameter 17 and depth is 5. So 5 mm depth, and another smaller one is a through hole. Okay. So first you have to create this larger one of 70 diameter and up to depth 5 mm. Then for the next sketch, what we have to do, we have to draw this smaller hole of 8 diameter. Simultaneously we will draw this profile. Okay, and because it is also through one, so it simultaneously you can uh, pocket that surfaces. Okay, so in two sketch this two will be completed. Okay, for this one sketch, for this larger one, this smaller, and this one, the second sketch. Okay, so we'll start with this. Just you have to observe how much distance it is. So it is from this edge 25 mm, and from here it is 18. How it is 18? You can see. ये देखो यहाँ पे दिख रहा है इसका सेंटर 18 पे है. Okay, so it is matching the same centers. Okay, of this circle and this circle centers are same. So it is 18 mm this from here and 25 mm from here. Okay, so for this, select the surface and go to sketch. Go to sketch. Okay. So again, fit your screen, fit all in. Now make sure that you have to create that circle from this edge because it has that radius. Okay. From this edge, you have to select the circle, not from this edge. You can see it over here also. It is from this edge. So this is 18 mm and 25 of diameter 70. So randomly first use the circle command. Go over here and create one circle. Don't make the circle from this center. Okay, just offset you have to take the, and you have to create one circle. Create करो, बन गया. Okay. Now give the dimension to this circle. Click over this command and blue box command and select your circle. सर्कल को सिलेक्ट करो, सर्कल को हाँ, क्या कर रही हो, अजीब कर रही हो. रेडियस आ गया हो, डायमीटर आना चाहिए. कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड.
Click over the command. Click over the this one. Click click over the periphery of the circle. This one. Periphery. हे बघ ना इथं बघ ना वरती. Click. Now change this dimension diameter 17. 17. Now the center of this circle from this edge is 18 mm and from this particular edge it is 25 mm. So double click over this constraint blue box, okay, command, and click over the center of your circle and then click over this edge. So it will create the dimension in between that. Okay. Again, similarly, center and this particular vertical edge, it will create another dimension. सर्कल किधर है? ठीक है, सर्कल बनवलं नाही का तुम्ही? काय डायमेंशन द्या ना तो 17. अभी तक पीछे छो तुम लोग. ये 10 हो गया, 40 हो गया, तो बाहर गया. ये पॉकेट कमांड है, इससे मटर निकलना. Dimension up to last. Now select the surface, go to sketch, hit, use circle, to dimension. झालं काय? हाँ डायमेंशन गलत हो रहा है क्या? छोड़ो एक मिनट. ये इस पे दे दो ना. कितना है? 18, 17, 17, 17, 17. मिटा दो. 17, 17 करो ना उसको. डबल क्लिक करो इस पे. हाँ हाँ डबल क्लिक. 17. सेम वैसे ही करना है जैसे कि इसको किया है. अभी डबल क्लिक है ना, उसको सेंटर और ये सेंटर और एज. ये देखो फिर से करके दिखा रहा हूं मैं. देखो देखो. बघा आता मग करा. इतना क्या ऐसा अलग डिफिकल्ट नहीं है. देखो सर्कल लिया, सर्कल बनाया. ऑफसेट बनाना है, सेंटर में नहीं बनाना है. देन उसके बाद इसको डायमेंशन दिया ऐसे. ओके. इसको डबल क्लिक किया 17. देन डबल क्लिक ओवर दिस कंस्ट्रेंट कमांड. सेंटर पे क्लिक किया और ये एज पे क्लिक किया. इनके बीच में डायमेंशन आएगा. फिर से देखो, इसके सेंटर को क्लिक किया और ये वर्टिकल एज को क्लिक किया तो इनके बीच में डायमेंशन आएगा. इसको ऑफ किया, इसको डबल क्लिक करके कितना है वो 18 और दिस वन इज 25. अगर आपका हैंड अच्छे से हो गया तो 3 मिनट में कंप्लीट होता है. 3 मिनट गिन के पूरा ऑब्जेक्ट ओवर कंस्ट्रक्ट हो गया. ओवर कंस्ट्रक्ट कंट्रोल जेड हो गए. डायमेंशन दे दिए. ओके करें. नाउ exit this one. Okay, use again the pocket command. Use this pocket command. Now instead of up to last, change this to dimension. Change this to dimension. And instead of 32, you have to give 5 mm. 5 mm. ठीक है. 5 mm हो गए. Select OK. Now it will create that countersink. Okay. Now again click over the surface and go back to the sketch. क्लिक. हाँ गलत हो गया. 2 बार हो गया ना, ऊपर नीचे 2 बार.
इनके इनके बीच का है ना, तो इनको इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेंटर इधर का बीच का है तो इसको सिलेक्ट करना। लॉजिक कितना 8 25। ये पॉकेट लो और 5 नीचे लो। तो चेंज करो, अप टू लास्ट चेंज करो, डायमेंशन कर दो, ड्रॉप डाउन करो उसको। डायमेंशन लो, पहले डायमेंशन पहला वाला है, पहला वाला डायमेंशन लिखा है ना वहाँ पे, उसको ड्रॉप डाउन करो। ऊपर डायमेंशन, हाँ क्लिक करो उसको, हाँ इसको 5 हाँ 32 की जगह 5। ये ओवर कंसर्न कर दिया। हम्म. आता इथून तर तू दिलेला आहे, याला 25 करून घेऊ, 25. आता आपल्याला काय पाहिजे, ह्याच्यात आणि ह्याच्या मध्ये पाहिजे, तर तेच सिलेक्ट करायचं आहे। डबल क्लिक केलं, याला सिलेक्ट कर आणि ह्या एजला सिलेक्ट कर, मध्ये एक डायमेंशन होईल, वरती घेऊन जा, त्याला क्लिक कर, डायमेंशन चेंज कर। तुमने भी वो गलती की। अब ये और ये इसके बीच में ये है, और ये अपने को बीच में चाहिए ना इसके, तो ये और ये लेना पड़ेगा एज। एज गलत सेलेक्ट कर रहे हैं। डबल क्लिक किया, इसको चेंज कर दो। कितना है वो, 18। ये कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है। 96 अब बरोबर है। ठीक है। अब नेक्स्ट, दो स्केच बनाने एक इसमें, यानी कि यू हैव टू यूज दिस 8 डायमीटर एंड दिस डोम शेप। अब डोम शेप बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपको रेक्टेंगल से भी डोम शेप बना के दिखा सकता हूँ। हाँ, तो डोम शेप में टाइम पास नहीं करना है, सर्कल बनाओ फिर वो ट्रिम करो ये करो। उससे अच्छा है सीधा सीधा रेक्टेंगल बनाओ और बाद में फीचर कमांड यूज करके उसको डोम क्रिएट करो। ओके, सो simple circle, select circle, and then create a circle over here। randomly कहीं भी बना दो, बाहर बाहर की तरफ किधर भी एक सर्कल बना दो। give the dimension 8 diameter, 8 diameter, 8 diameter कर दो। ओके, अब 8 diameter हो गया, क्या कंट्रोल जेड करो एक बार। हाँ अभी पॉकेट कमांड जाओ, पॉकेट कमांड अप टू लेफ्ट कट करो, डायमेंशन करो, और वहां पे टू, वहां पे आएगा 5 5। ओके करो बस। ओके हाँ ओके, सरफेस सिलेक्ट करो, सरफेस सिलेक्ट करो ऊपर का। हाँ वही 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 सर, नीचे का हाँ। स्केच में जाओ, स्केच सादा स्केच। हाँ क्लिक करो ना, वो साइड में क्लिक मत करो। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, कैंसिल करो। ये चेंज करा, ये चेंज करा पहला, वो तुमने वो दूसरा ऑप्शन ऑन किया है, स्केच में दूसरा ऑप्शन ऑन हो गया है, ये चाहिए। हाँ रैंडमली बना दो, 8 डायमीटर दे दिया। अब क्या करना है देखो, इसका सेंटर फिर से वो 25 और 18 करने की जरूरत नहीं। आपको बता दो कैसे करना है। जस्ट सिलेक्ट दिस सर्कल फर्स्ट, वो ब्रिक रेड कलर हो गया। नाउ यूज कंट्रोल बटन ऑन योर कीबोर्ड, प्रेस करो उसको, प्रेस करके रखो, एंड मूव योर कर्सर एंड सेलेक्ट दिस सर्कल। फिर ये मल्टी सिलेक्शन के लिए कंट्रोल बटन, जैसे कि आप इमेजेस, मल्टी इमेजेस सिलेक्ट करने के लिए भी कंट्रोल बटन दबा के इमेज पे क्लिक करते जाते हैं, फिर वो सिलेक्ट होते जाता है, वैसे ही सेम केस। So two are selected. Now instead of dimension, one another option is now active. Constraint defined in dialog box. Click over that. Dimension के just ऊपर है. Click over that. One small window appear. Use constraint definition as a concentricity. Click over that checkbox. हाँ नहीं वो सर्कल बना दो भाई, सिंपल सर्कल बना। कंस्ट्रेंट डायलॉग बॉक्स, देखो फिर से करके दिखा दो। Select this circle, control button, select this another circle, go to this constraint defined dialog box,
यूज कॉन्सेंट्रिसिटी, यूज कॉन्सेंट्रिसिटी। दोनों सर्कल सिलेक्टेड होने चाहिए तभी होगा वो। नाही ना, हे बघ, ह्याला सिलेक्ट करायचं, कंट्रोल बटन दाबून ठेवायचं. अरे, हे तू पहिलं पॉकेटच केलं नाही. पॉकेट केलेलं नाही ना अजून. पॉकेट तर करून घे पहिला. पुढचे स्टेप जात नसतील अशी. 5, 1 मिनट हाँ. अब हो गया वो. अब फिर से लेके जाना है, यहाँ पे स्केच में जाना है और फिर सर्कल बनाओ 8 डायमीटर का. अब इसको सिलेक्ट करना है और ये सर्कल को सिलेक्ट करना है कंट्रोल बटन दबा के, और फिर आपको कॉन्सेंट्रेसिटी दिखेगा. वो देखो डायरेक्टली सेंटर मैच हो गया. आपने पॉकेट नहीं किया ना, पॉकेट नहीं किया ना, ऐसे कैसे बनेगा वो? नहीं ना, इन्होंने पॉकेट करके आए. हाँ, कॉन्सेंट्रेसिटी, यस राइट. एग्जिट किधर गया है इसका? एग्जिट किधर है? हाँ, exit. इसको पॉकेट तो कर लो पहले. 8. अभी इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल बटन दबाओ, दबा के रखो. इसको सिलेक्ट करना है, 2 सिलेक्ट हो गए. और फिर ये इसके ऊपर डायमेंशन के ऊपर है, कॉन्सेंट्रेटेड. हो गया. अब देखो इस साइमल्टेनियसली आप दूसरा भी स्केच बना लेंगे, जिससे कि हमें फिर से और स्केच बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. कौन सा है, देखो ये वाला. तो ये देखो कितना है, 8 है. 8 रेडियस है, यानी कि ये कितना होगा, 16. हाँ. उसके बाद ये ऐसा 20 है सेंटर तक. ओके. तो हम क्या करेंगे, ये 8 बिट का करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है 20 बाय 16, यानी विड्थ 16 है और ये लेंथ जो है 20 mm. तो कैसे बनाना है देखो, सिंपल रेक्टेंगल लो. ओके. क्रिएट वन रेक्टेंगल ओवर एयर. सिंपल ऐसा रेक्टेंगल बना लो. हम्म? देख लो पहले. बना दिया रेक्टेंगल. अब डायमेंशन में जाओ, इसको सिलेक्ट करो. इसका डायमेंशन दो, 16 है तो 16 दे दो. इसका कितना है, 20 है तो ये 20 दे दो. ओके. इसको डीएक्टिवेट कर लो. अब ये एज, कंट्रोल बटन, और ये हॉरिजॉन्टल एज, ये दोनों को सिलेक्ट करना है. अगेन वो डायमेंशन के ऊपर वाला ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे देना, यूज करना है कोइंसिडेंस. ओके. ये होगा. तो इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है ये चेक करो, कितना है वो, 24 है. ये से 24 है, तो ये 24 देना है हमें. ये एज और ये एज के बीच में डायमेंशन 24. हो गया. समझ में आया क्या? स्टेप बाय स्टेप करते. ये देखो, रेक्टेंगल लो पहले. ये रेक्टेंगल रैंडमली बनाओ, यहाँ पे बनाया. डायमेंशन डबल क्लिक करो इसको. इसको डायमेंशन दो पहले. ये इसको दिया, इसको दिया, दिया. इसको बंद कर दो. इसको डबल क्लिक करो. कितना है, 16. ये कितना है, 20. यहाँ तक हो गया क्या? सबका हो गया. 20 और 16 हो गया. 20 और 16 कर दो. अब क्या करना है देखो, ये एज को सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट करो, कंट्रोल बटन दबा के रखो और ये एज को सिलेक्ट करो. हो गया क्या एज, दो सिलेक्ट. एक ब्रिक रेड कलर होगा, एक डार्क रेड कलर होगा. अब डायमेंशन जहां पे देते हो उसके ऊपर वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट करो. कंस्ट्रेंट डिफाइंड डायलॉग बॉक्स. क्या ये विंडो आ गई क्या? इसमें कोइंसिडेंस वाला ऑप्शन सिलेक्ट. वो हो गया वो. ओके.
अब सेंटर टू ये डिस्टेंस देना है, डबल क्लिक करो इसको, डायमेंशन वाले को, सेंटर, रेक्टेंगल का सेंटर, और ये एज, इनके बीच का डायमेंशन कितना है वो 24। इसको ऑफ करो। हाँ, ये हो गया ना, 20 और 16 हो गया बरोबर। अब अजून एक डायमेन्शन दे, कुठं डायमेन्शन कुठं आहे? इकडे हे जो सेंटर आणि हा edge. तिथे 24 टाक, 24 इंटर मार, हो गया। अब ये लाइन और ये लाइन मुझे मैच करनी है। इसके लिए मैं क्या करूँ, पहले तो इसको बंद कर दूंगा, ये लाइन को सिलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल बटन दबा के रखो, और ये एज को सिलेक्ट करो, तो ये दोनों सिलेक्ट हो गए। हाँ, और ये डायमेंशन का पहले वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे कोइंसिडेंस कर दूंगा, चिपक गया उसके लिए। हाँ हेलो, ये डायमेंशन दे दो ना, 24, इसका सेंटर और ये इनके बीच का डायमेंशन, डबल क्लिक कर लो इस डायमेंशन को, इनके बीच का डिस्टेंस लो, सेंटर, हाँ क्लिक करो, एज को, वर्टिकल एज को सिलेक्ट करो, हाँ क्लिक, बाजू ऊपर लेके जाओ, क्लिक करो, 24 करो उसको, हाँ 24। हो, चुकले एक डायमेंशन, असं नाही, हँडल करेल, हे बरोबर आलं म्हणजे, हे डबल क्लिक केलं, सेंटर, इंच मधलं 24। अरे बदलो ना इसको, कितना है 16, 20, ये चालू है ना, अब इसका एक डिस्टेंस है, कंट्रोल बटन दाबाओ, दाबून ठेव, वो सर्कल नहीं बनाएगा, सर्कल को क्या है, इसमें एक सर्कल साइड में किधर भी बनाएगा, आर्ट, इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल बटन दबाओ, कॉन्सेंट्रेशन, एग्जिट, ओके, हो गया, झाले का रे, ओके, एग्जिट कर दो। अब एग्जिट करने के बाद हमें क्या करना है, पॉकेट फिर से यूज करना है, यूज दिस कमांड पॉकेट, again change this dimension to up to last, because it's a through, okay, up to last and select okay, okay, up to last and select okay. Just now, next thing what we have to do, you have to create the dome for this, okay. So for creating the dome, uh, how much radius it is, 8 mm, r8. So for this, again use this edge fillet option, select this edge fillet option, and काय झालं, हा ते एज मॅच नाही झाले तुमचे, 2 मिनिट करू, एज फिलेट ऑप्शन, फिर से ले लो एज फिलेट वाला, लिया, चेंज दैट 18 to 8 mm, 8 mm, select edge, this vertical edge, this one, this only this vertical edge, rotate your object, select this another vertical edge, दोनों इधर उधर के दोनों एजेस सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करो, रेड हो जाते हो, नाउ सेलेक्ट ओके, दोनों एजेस सेलेक्ट करके ओके करो,
So you will get that dome shape. Okay? Oh, तुमने टच नहीं किया, कौन बने? एज पे लिख लो, ये एज को सिलेक्ट करो, ऐसा ये एज को सिलेक्ट करके ओके करो, ये ऐसा वर्टिकली सिलेक्ट करो, ओके ये एज पे लो। हाँ ओके करो, हाँ करो ना, कंट्रोल जेड करो एक मिनट। अरे, एक सेकंड, मुझे अभी डायमेंशन फटाफट बताओ क्या है। 32 है। उसके बाद क्या है? नहीं, 25 सेकंड। कितना है? 16। 24। ये वाला इसको सेलेक्ट करो। वो एजिस, वर्टिकल एजिस, ये नहीं है, गलत गलत गलत। ये रह कर दिया। ये वर्टिकल एज 8 हो गया। चलो गुड। अब उसने ऑफसेट नहीं किया है, रुको।
ये कौन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आ रहा भी नहीं। मुझे हाँ, मिडिल वॉच किया तुमने, सेंटर में बना देना। सेंटर में नहीं बनाना पड़ेगा। ओके, चलो। तो नेक्स्ट, अभी देखो ये दो चीजें रह गई, तीन चीजें रह गई अपनी। तो ये वाला जो है नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इतना। अब यहाँ पे हम करके रोक रोक देंगे, सेव कर देंगे उसको। ओके, सिंपल है। तो इसको देखो क्या करना है, एक सर्कल बनाना है और कॉन्सेंट्रिसिटी देना है किसके साथ, ये रेडियस के साथ, जिससे कि हमें ये यहाँ से इतना है, यहाँ से इतना है, ये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो फॉर दैट रोटेट कर लो और ये सरफेस सेलेक्ट करो और गो टू स्केच। नहीं नहीं नहीं, गलत से गलत किया है। ये वाला सरफेस वर्टिकल सेलेक्ट करो, स्केच में जाओ। गए क्या? हाँ। अब रैंडमली एक सर्कल बना लो इधर, कहीं भी बना लो। क्या डायमेंशन है उसका? 17, 17 डायमीटर। हाँ, 17 डायमीटर सर्कल। तो उसको डायमेंशन दो 17, दिया? 17 दे दिया। अभी क्या करना है, इस सर्कल को सिलेक्ट करो, कंट्रोल बटन दबाओ और ये वाले रेडियस को सिलेक्ट करो, सर्कल और कंट्रोल बटन दबा के ये वाला रेडियस। ओके, selected, go to this constraint dialog box, define dialog box, उसमें कॉन्सेंट्रेसिटी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो। कॉन्सेंट्रेसिटी वो आ गया, ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको कुछ इधर उधर से कुछ लेने की जरूरत नहीं। ओके, नाउ एग्जिट दिस एंड यूज पैड कमांड अगेन। पैड यूज करना है अभी, पॉकेट नहीं, पैड। 5 mm आगे आना चाहिए, वो 5 mm, और सेलेक्ट हो। ओके, ये देखो, जैसे आप आइसोमेट्रिक ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यू विल गेट द सिमिलर पर्सपेक्टिव लाइक दिस। ये ऐसा ही आएगा। ये देखो, जैसे आप आइसोमेट्रिक पे क्लिक करोगे, माउस से नहीं आएगा वो, आइसोमेट्रिक पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी 120 डिग्री के एंगल पे आएगा वो। ये देखो, ये क्यूब जैसा ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक करो, क्यूब जैसे ऑप्शन पे क्लिक करो और फिट कर दो इसको, बस आ जाएगा वो।
हाँ, आप सेव कर दो इसको, फाइल, गो टू फाइल, सेव इट, आपके नाम से करो, मैं आपके बैच के हिसाब से करो, एक फोल्डर क्रिएट करो कोई भी ड्राइव में, याद रखो कौन से ड्राइव में कर रहे हैं, और अगले बार यही बेंच पे आपको बैठना है, दूसरा किधर भी जाना नहीं। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं आपका बैच के हिसाब से मैं सेव कर रहा हूँ, ए टू बैच, जिससे कि मुझे आसानी हो। तो सेव इट। अब दो चीजें रह गई बस, क्या है, ये वाला हिस्सा और ये स्टिफनर, बाकी सब हो गए। लाइन डिलीट करा।